that was converted into university named University of Engineering and Technology Roorkee in 2021. In 2023, the university name has been changed and College of Engineering Roorkee was merged into one unit named COER University. Now the entire institution is COER University. So we are having total 11 colleges here, starting from computing. In computing, we are having diploma program. In UG, we are having computer science and engineering. And we are also having two specializations in computer science. One is cybersecurity and second is artificial intelligence and machine learning. Apart from this, we also run PG program in computer science, MTech, and we also run PhD program here. In engineering, in core engineering basically, and the name of the college is College of Engineering. We are having 3 departments there. We run BTech, Diploma, MTech and PhD in Mechanical Engineering, Civil Engineering and Electrical and Electronics Engineering. We also run management courses here, and in management courses we run BCom, BBA, MBA and the PhD programs. We also running legal studies where we will start the legal studies in the coming session, and we are having LLB, BA LLB, BBA LLB in this. We are also running agriculture courses in which we are running UG program, PG program and PhD also. We are also having some medical disciplines. About that the registrar will let you know. So we have been ranked by esteemed higher education portal Career 360, and we are ranked 11th among emerging state private universities in India, and so many awards we got during last tenure. These are some glimpses of the awards. Recently, our chairman sir, the Chancellor of the university, has also been recognized by the Honorable Governor of Uttarakhand, Gurmeet Singh ji. Our students are also doing well. Recently, 2 of our students won several prizes in different hackathons organized at national level. These are some glimpses of these functions, events. We also call some eminent personalities of India. Our faculty members are also doing good research. Our faculty members also write research patents. So our placement ratio is also very good. So thank you so much. And I request Registrar Sir to speak about the medical courses. Thank you, PVC sir, for giving me an opportunity to speak about the medical courses. In 2021, our Honorable Chancellor J.C. Jain has thought to give something back to the society. And he started to work in the field of medical. मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब जैन साहब ने विचार बनाया हमारे चेयरमैन साहब ने, तो 2020 में जब कोविड काल चल रहा था तो 60 बेडेड हॉस्पिटल हम लोगों ने स्टार्ट किया और मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल के नाम से. और आई प्राउडली से उस टाइम मैं तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर डॉक्टर अमित भट्ट और बीएम सिंह जी थे, उन लोगों ने उस हॉस्पिटल को बड़ी सक्सेसफुली रन किया और नियर बाई लोकेलिटी को सर्व किया उस कोविड काल के अंदर, और 100% पेशेंट यहाँ से रिकवर हो गए. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस कोविड काल के दौरान जब हमने नया हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया और 100%
पेशेंट्स को प्रॉपर रिकवर करके पहुंचे। उसी के दौरान मैं कह सकता हूं कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे हॉस्पिटल को कुछ बेड्स और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, अच्छे काम के परिणाम में। इसके बाद 2021 के अंदर वी स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वी स्टार्टेड अ BAMS कोर्स, Bachelor of Ayurvedic Medicine course, which has been approved by the NCSM New Delhi. Then we go to the second field, that is called nursing. We started a course, BSc Nursing, which has been approved by the Indian Nursing Council, New Delhi. We also started 3 paramedical courses in 2021. First is BPT, Bachelor in Physiotherapy, BMRIT, and BMLT. If we talk about the education, the legacy of the COER has always been known for the best education provided in the field of engineering as well as the management. मेरी मेडिकल की फैकल्टी ने भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया और आई प्राउडली से कि 2002-03 के अंदर हमारा BAMS गवर्नमेंट कॉलेज के बाद भरा, पतंजलि खाली था काउंसिलिंग के अंदर, हमारा BAMS उससे पहले भर गया। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। 2002-03 के अंदर हम लोगों ने फार्मेसी फील्ड में एंटर किया और हमने 2 कोर्सेज स्टार्ट किए, बी फार्मा और डी फार्मा। ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि फर्स्ट बैच जिस समय बी फार्मा का बहुत सख्त कंपटीशन था और उसी साल 2002-03 के अंदर मैं कह सकता हूँ 12 फार्मेसी कॉलेज हरिद्वार रुड़की के अंदर आए। उस बार भी बी फार्मा हमारा कंप्लीटली फिल हो गया 66 के साथ। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस साल क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में भी जो लेगेसी कोर में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में दी है उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस साल हम मास्टर्स कोर्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। जो कोर्स इस साल स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज MPT स्पोर्ट्स, MPT न्यूरो, MPT ऑर्थो। इसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टार्ट MSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये कोर्स 24-25 सत्र में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे जोर देते हैं और फोकस करते हैं कि हम कैसे स्किल इंडिया तैयार करें। इस स्किल इंडिया की को नजर में रखते हुए 2023 के अंदर हमने वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया, इसका नाम था BWOC ऑपरेशन थिएटर। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ अगेन फर्स्ट ईयर में जब हमने BWOC OTT स्टार्ट किया, हम लोगों ने अपनी 30 सीट्स कंप्लीटली फिल कर ली। तो ये भी अपने आप में मेडिकल की अचीवमेंट है। और इस साल हम लोग स्किल इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हुए डिप्लोमा इन डायलिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्किल कैटेगरी का कोर्स। इसके अलावा क्योंकि एजुकेशन is not only giving the education to the student and make them a good citizen, it is also a thing how can we give back to the society. सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2021 से हम लोग लगातार कैंप्स करते हैं, गांव में जाके, देहात में जाके। अभी हमने 2 बड़े अच्छे कैंप्स किए। आमतौर पे ये कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेजेस के कैंप गांव और रूरल में होते हैं। हमारे फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं। अभी इन्होंने बहुत अच्छा कैंप सोसाइटीज में किया, आर्थराइटिस के ऊपर, डायबिटिक के ऊपर, कार्डियक प्रॉब्लम के ऊपर, प्लस एनीनेटल एंड पोस्टनेटल फॉर द वुमेन। इस कैंप का बड़ा अच्छा फीडबैक आया और लोग हमारे हॉस्पिटल तक आने लगे। नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा आप लोगों से मिलेंगे तो मैं कह सकता हूँ we will be having a 300 multi-specialty hospital in the campus. So we are hoping कि जो कोर की लेगेसी 98 से 2021 तक इंजीनियरिंग में है, ये मेरा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को, DM सर और बाकी सबको वादा है कि 27 तक वही लेगेसी हम मेडिकल में लेके आएंगे। थैंक यू। Thank you, sirs, to inform our guest about COER University and medical courses. Ladies and gentlemen, we are privileged to have with us Mrs. Mohua Dutta and Mr. Suru Kamal, who bring a wealth of knowledge and experience in the field of international education. First, I would like to invite Mr. Suru Kamalji to share his valuable information with all of us. Please, sir.
नमस्कार, सुप्रभात। होली के पावन शुभ फेस्टिवल के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। कल मैंने देखा कि यह कैंपस तो रंग में था होली के गुलाल से, और लग रहा था कि जैसे साक्षात ब्रजभूमि वृंदावन और मथुरा की झलक यहाँ आ गई। बहुत खुशी हुआ मुझे कल यहाँ आके और आप सबके साथ शिखर वार्ता करते हुए और वार्तालाप करते हुए। Honorable Vice Chancellor जी, you are a dear friend of mine. Honorable Pro Vice Chancellor, Honorable faculty members, Dean, teachers, my dear lovely students, boys and girls. कल तो इतने देर तक वार्तालाप किए, तो सोच रहे कि आज अवकाश है, छुट्टी है, तो क्या छुट्टी में आप सबको बोर करना चाहिए या फिर कुछ शिखर वार्ता हो जाए। I know you all are in a holiday mood and बस चले तो शायद इस ऑडिटोरियम के अंदर ही आप लोग शायद होली खेलना पसंद करेंगे। मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है कि सब के सब रंगमय हो जाए। यहाँ रंगमय तो भारत है ही पूरा। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी आप सबको थोड़ा सा रंगमय करते हैं, विदेश के बारे में बता के। Definitely the whole program is for my sister, my younger sister, Mohua Dutta. She is Indo-Canadian, born in Bharat, in Shillong, but school के समय से she has been in Canada और आज भारत के एक गर्वित नागरिक हैं कनाडा में। मैंने अपने बहन को बचपन से ही देखा है, हमेशा से शरारती रही है, and she has been very chirpy and very friendly with people. She chose her career also based on her friendly nature, mostly in relation to public relation. जब भारत में थी उस समय भी वो एयरलाइंस इंडस्ट्री के साथ और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के साथ रही है, और भारत से कनाडा जाने के बाद she got involved with the banking industry, also with the hospitality industry. Later on, with education there in Canada, currently she is member of the School Education Board in Canada. She does a lot of social work and a lot of humanistic work, both she as well as her husband. कोविड के दौरान मैंने देखा है उन लोगों को भारत के लिए कितना समर्पण भाव से चीजें किए हैं, और जिस हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सारी चीजें वहां से भेजना भारत के लिए, और उसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाई वगैरह सारी चीजें, वो सब अपने खुद के पूंजी से, वो अपने आप में मेरे नजर में बहुत अतुलनीय दृश्य था। She always wanted to do something for this country, for भारत, और इसीलिए कोविड से पहले she founded this company MDS IndoCan, और मेरे ख्याल से वाइस चांसलर साहब शायद आज आपके प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU होने वाला है इस कंपनी का। We have MOUs with several IITs as well as several governmental departments of the government of Bharat, as well as with several state governments. और कोशिश ये है कि वहाँ की हायर टेक्नोलॉजी और वहाँ के हायर एजुकेशन को कैसे भारत के पटल पे लाया जाए, और कैसे हमारे देश के बच्चे
वहाँ के हायर एजुकेशन का एक अच्छी तरह से लुत्फ उठाए और उसके साथ साथ हाउ दे कैन एनहांस देयर नॉलेज through higher education in Canada, because Canada is very, very well known for its educational system. Several top-ranking universities of the world are from Canada, and खास करके public health, nursing, paramedical, aeronautics, higher technology, management, and a couple of more areas in which Canada is very, very famous, and Canadian institutions and universities are doing a lot of work in that. ये जो हम लोगों की company है, she has forced me to be the honorable and the honorary India advisor of this company. And our company, MDS IndoCan, we cater to higher technology, B2B business, nanotechnology, as well as medical technology, higher education, hospitality, and many more areas in which we are working in close quarter with IITs as well as with the government departments, and we have also initiated talks with many ministries of the government of Maha. Now it is in that context only I floated the idea to her and also to Professor Mittal yesterday. Why not utilize this opportunity of listening from her about higher education and collaboration with your institution? हालांकि sister और husband वो लोग यहाँ पे vacation और कुछ professional meetings के लिए आए हुए थे, and she was more in a holiday mood. But I said that in that holiday mood also you should share your experience as a young woman entrepreneur, and also at the same time you should interact with the students and let them know about the scope and opportunities in Canada. And मेरे ख्याल से महुआ की जो interaction होगी वो आप सबके साथ बहुत informal level पे होगी. She would like to have a bilateral connect with the students ताकि आप सबसे भी जानें और आप सबके queries के बारे में समझें और फिर उस हिसाब से आपको चीजें बताएं और आपको आपके साथ वार्तालाप करें. मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह का विस्तार हमारे देश में हो रहा है एजुकेशन को लेके और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं और खास करके NEP 2020 के अंदर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 sky is the limit for international collaborations, international exchange of ideas, as well as for international initiatives. NEP 2020 ने एक तरह से पूरा दरवाजा खोल दिया है जिसके माध्यम से आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज और भारतीय यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेस B2B कंपनीज जैसे हम लोगों की कंपनी है ऐसे कंपनीज के साथ डायरेक्टली MOU साइन कर सकते हैं. इसमें कोई पाबंदी नहीं है और उसके साथ साथ जॉइंट कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से जॉइंट कोलैबोरेशन for faculty exchange programs, for short-term courses, long-term courses, and multiple fields. All these opportunities have been given by the NEP 2020 under the direction of the Honorable Prime Minister. क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है, अगर नया भारत बनाना है, और अगर एक डेवलप्ड भारत अगर बनाना है, वो अमृतकाल के मिशन 247 के माध्यम से उसमें विकसित ज्ञान की बहुत आवश्यकता है. जैसे विकसित नारी शक्ति, विकसित किसान, विकसित मजदूर, विकसित ज्ञान भी बहुत आवश्यक है और विकसित युवा पीढ़ी. तो इस विकसित ज्ञान के चीजों को ध्यान में रखते हुए है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये पेंडोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन किया गया है NEP 2020 के माध्यम से. तो आज मैं समझता हूँ कि जो 15 साल पहले बहुत ही कठिन होता था किसी भी भारतीय संस्था को या फिर किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी को to have a kind of a collaboration with any universities or institutions abroad,
That is very easy now, बहुत सरल हो गया है। और उसके साथ साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ भी डायरेक्ट MOU 2014 से पहले करना नामुमकिन होता था किसी भी भारतीय इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी के लिए। आज ये प्रक्रिया बहुत सरल हो चुका है। ज्यादा समय आप सबका नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि शायद आप लोग इच्छुक होंगे महुआ से और वार्तालाप करने के लिए और सुनने के लिए, और खास करके युवा जनरेशन के बच्चे, आप सबके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। I'm sure you all will have a lot of queries. So I will suggest that this session should be more of a friendly, informal kind of a session, and I think Mohua will be more comfortable, talking to you all by sitting here. तो मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और होली की और डोल यात्रा की बहुत बहुत बधाई। जय राधे राधे, जय राधे कृष्ण, जय श्री राम, हर हर। Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful address. To know more about study abroad, we have among us an eminent speaker, Mrs. Mohua Dutta, CEO MDS IndoCan, Ottawa, Canada, to whom with a spring in my step and anticipation in my heart, I extend a red carpet welcome. I would request everyone to join your hands together and welcome her. Now I request you, madam, please share your information about study abroad with our learned faculty members. Hello. So, good afternoon, everyone. I believe I can start now. So, good afternoon, Honorable Vice Chancellor Dr. Mittal, Pro Vice Chancellor, Dean and faculty members, and my dear students. First and foremost, a very happy Holi to everyone. So, my brother has almost said everything about me. So, I was just doing some sign language and saying that leave something for me to talk also. As he mentioned, let me give you a little bit background why we are here. So we actually came to Dehradun for some work, and I was not so prepared for this session. I thought it was an informal session, as my brother mentioned yesterday. He said it would be a classroom session, so I did prepare very well. But if you have any questions right now after I'm done talking, please feel free to ask me. As he mentioned, I was born and raised in India, in Meghalaya, northeastern part of India, in Shillong. We did our schooling from there. And so after that, moved to Canada. I did my undergrad in science and then studied business marketing there. And after which I was doing corporate sales with different corporations, banks, IT companies. I think I'm very extrovert. I love to talk. So sales is absolutely my cup of tea, So I even though I studied science, but still I didn't want to do anything in that. And went into corporate sales. I did that for a good few years.
After which, a very unfortunate thing happened in all of our lives. My mother, who lived in Canada, she passed away in Canada. So the grief never goes away when you lose your parents. And I didn't want to go back to sales and marketing and talking about products and doing presentation. I didn't want to do that at all. So I was taking a break. We came to Haridwar, to Uttarakhand, and went back to Canada. And I was taking some time off. And after which this opportunity came for the school boards there, the education boards there. So I started working, I had my interview and everything, and I started working with them. Like my brother mentioned, I am a member of the education board, and I am married, happily married. My husband is an engineer from Kanpur, did his master's from US, from Boston University and Harvard, and did his MBA from Canada. He's in IT. So we are settled in Canada now. I've been there for like over 20 years now, almost 21, 22 years. So we are Canadian citizens and everything. And exactly how he mentioned why we got this registered in Canada is to just fill in the gap between India and Canada in business. India and Canada, India is a huge market, very big potential, but we are not doing as much business as we should do with India. So just giving an example, one single day the business we do with Canada and US, one single day. That's what we do between Canada and India in 1 year. So it's very little right now. So hopefully we can, bridge the gap between India and Canada because we were raised here and born here and we've been there for so long. So we know both the countries very well. MDS IndoCan, as my brother mentioned, it's a consulting company which we got registered in Ottawa. Ottawa is the capital of Canada. I'm sure most of you know that. So this is to connect businesses between India and Canada and vice versa, and with any other third country as well. So right now, our core sectors are clean tech, clean technology, anything to do with the environment, to clean the rivers and ponds for government projects in India or any private project, and vice versa, as well as to take that technology to Canada, and bring technology from there. So it's all related with environment. We all want to breathe fresh air here in India as well. And it's the main thing, and we should really focus on that. That's the need of the hour right now, environment. So our main focus is on clean technology right now. Besides that, medical technology, which means bringing in machines from Canada. As I said, that medical system in Canada is very well developed. I won't say that in India it is not. We have excellent doctors in India, and the medical system is very, very good in India. AIMS, SGP, PGI hospitals, even the private players, they're doing very well. But I think in, India still needs the technology from abroad. But it's just not Canada. I mean, it could be US, it could be Europe, anywhere. So we are into that as well, medical technology, bringing in machines for oncology, cardiology, I think the register just mentioned that you have a medical school here already, and it's going to be bigger in future. So maybe we can also help out for the medical school here as well. So medical technology, clean tech, and education is another thing. So as you mentioned, we have signed MOUs with IIT for different projects, for collaborations, for faculty collaboration, for students, for research, also with NITs in India. And we will be very happy to sign an MOU today with your prestigious institution, as my brother mentioned. So this would be basically for students, and you have excellent programs here, engineering, management, medicine, and so many more, nursing, paramedics, legal, law, excellent actually. You have a number of subjects here. Besides, we don't have anything in Canada called Ayurveda or, holistic, anything holistic. So on that, we can really collaborate and work. And as you know,
whether it's Canadian or European or any, anyone with a wide background, they are so fond of India when it comes to anything, to do holistic learning, or just coming to Rishikesh for spas and Ayurveda and everything. So I think we can really collaborate in that. And we can also bring delegations from Canada to your institution and then further take them to Rishikesh, for different programs, packages, which we can, your institution cater to the Canadians from there. So, and we will go back and talk about the Ayurveda program which you have here. We'll take some literature from here and go back and talk to the colleges there. Not at the university level so much. Another thing I want to mention, the colleges are as good as the universities there. So they're very well reputed, most of them. And one of them, which is in our city, the nursing program there, the students get their degree from the university actually. So I have to tell you this, we are Canadian citizens. Now, say for instance, I want to change my background and I want to go and learn, go to a nursing school and become a nurse. So for me, just because I'm a Canadian citizen, I don't pay that much fee. But for an Indian student to go, let's be honest about this. You'll pay probably like 3 times the fee there for nursing. But one thing very good about the nursing program, which we have in our college is, you get a degree from Ottawa University, which is a university. So you pay half of the fee because it's a college program, but you get the degree from the university. So you don't have to pay the fee which is at the university, which is even higher. So I think at Delhi University also you have colleges. It's exactly somewhat like Delhi University. You get the degree from the university, but you're studying in a college. Those colleges are all under the university. So this is one very good thing about, it's called Algonquin College in our, it's a huge campus, big college, it's almost like a university. You get the degree from the university, but you're paying half the fee when you're doing starting a program at the college. So we will collaborate with your university for sure, and we would be pleased to collaborate with your prestigious university here, and we can work on different programs. So it will be students who want to, pay their fee and go study abroad. That is one option. Then we can have faculty exchange programs. Your faculty can go and you do an exchange program, short term, maybe like 3 months or something. If faculty is interested to come here, they may be interested to come here as well. This is an upcoming university, though it's from 1998, I know, but because it's a private university, many things are better here than any other. I just don't want to mention about any other university, but I'm sure. And with what the vision Dr. Mittal has and all the faculty members, the dean, the registrar, I think this is amazing what you're doing here. And we really look forward to collaborate. Exchange programs, students going and studying there. So it could be paramedics, it could be legal, it could be nursing, it could be engineering, MBA, anything, BBA, anything. So, and also full funded students, as well as students who wants to go for exchange programs, faculties who wants to go for exchange programs. We can bring delegations from there for Ayurveda especially, and from for the medical school maybe. We can have another thing. I was looking at the phone when I just came and said, because I have like some small short notes which I made this morning quickly. So one thing which we could do also maybe, the faculty members who teach the paramedic students there, we can have online classes for your university here. They can guide you. And I don't know how it's going to work right now because we have to go back and talk to them. But we can do that. If they're willing to come here, they can even come here for a week. Maybe they can come along with us. We will get them here. And, so yeah, I think we can work on many things. If you're doing anything on clean technology, we will talk about that when we are at Dr. Mittal's office. So anything which we can, not that, everything is great about Canada, no. Every country it has its advantage and disadvantage, right? So
there are many options. Maybe we can take something back from here to Canada as well. And whatever it is, bottom line is this: we're still very desi. We visit India every year. Till hai Hindustani, it will always be like that. That's just our Karma Bhumi. We were born here and raised here, so this is our Janam Bhumi. And, so we will do as much work we can do between India and Canada, vice versa, humanitarian work here, like my brother mentioned. I want to tell you this. The main intention of this company, why we got it registered, is just to do more humanitarian work for India, for the underprivileged. This is the main motto of this company, the main vision of this company, is to do more work for India, for the underprivileged. I'm so sorry, not for the middle class or any other class, but just for the underprivileged. Only for them. So this is the main vision of the company. We're not looking for any profit, anything for ourselves. When it will take off even better, we hope so this year, in the future, but everything would be for work back home in India. We really want to go give back to our country, where we were born and we grew up. So having said that, I think again, as my brother mentioned, it's festival time. We all love the color, the festival of colors, and I'm sure you're looking forward to be with your family and enjoy the day. So I am going to hang up now, and we will sit at Dr. Mittal's office and discuss more. Thank you very, very much for coming today. It's a weekend. I really appreciate that all of you are here. And we really look forward to working with you in future. And any questions, anything Dr. Mittal just mentioned, if I could do a Zoom call with the students later on, whether it's in Canada, we go back in Canada, or go back to Canada and do it there, or we do it from Delhi. We'll be in Delhi for a few more days. After that, we'll travel again. So we could definitely do a Zoom call with the students. And anybody has any questions, it's open right now. You can please ask me questions. I'm sorry, I know it's the weekend and we're not coming back to Dehradun or Roorkee just now. So if you have any questions, you can please ask me. And that's about it for today then. Thank you very, very much. I really appreciate your time here. Through a YouTube session. Sorry? Through a YouTube session, the students in which are connected, we are having some queries. One of the questions is from students: what are the top ranked universities in Canada? For sure. Yeah. That is known for offering programs in engineering. For what? What are the top ranked universities in Canada that is known for offering programs in engineering? Engineering. Yes. Yeah, for sure. So if they're watching me right now, right? They're watching me right now? Yes. So yeah. So Waterloo, University of Waterloo. Like we say Waterloo, Waterloo. Waterloo engineering is very, very good there. McMaster in Montreal is very good. Queen's University is very good. Toronto is very good. Ottawa University in our city, Carleton, these are all very good, but Carleton, I would say, their MBA program is even better. Queen's, their MBA is better. But Waterloo is a very good engineering college, university there. All their programs are very well known worldwide. And also, University of Toronto is another one. University of Western Ontario is another one. There are a bunch of universities which are very well known, worldwide. Yeah, British Columbia too. University of British Columbia is on the western part of Canada. We are from the eastern zone, eastern part of Canada, but most of the universities are well reputed there. But engineering at Waterloo is very, very good. Very good, actually. I can vouch for them. One more question I'm getting from the students. The Sure. students want to know about the scholarship opportunities and what are the procedures or the tests that students need to go to obtain those opportunities. To go and study abroad? Yeah. Sorry, I forgot to mention this. So, as Dr. Mittal was mentioning yesterday, I think students are preparing here for TOEFL and IELTS. So you definitely have to have a good score in that. That's the English language program.
I know that all students here, they speak English, very good English, but still in Canada and US, it's a must. I mean, going anywhere, Australia, UK, anywhere, you have to score, I think it is around, it has to be above 6. So 6.5 or something like that. So that's the score for the English program. So that's called TOEFL or IELTS. IELTS, which is what you say in India. So it's IELTS. Regarding scholarship, you have to have very good score in the program which you're doing here. Only then a University of Canada, any university or even colleges, they can think about that. So you have to have very good score, and then you can apply. And if the university thinks that you're eligible for that, then they may. But number of scholarships are very minimal. Let's be honest about this, because you see in Canada, this is a huge big thing that students from India come to Canada. It is a very good thing for their economy. Like as I mentioned, example, if I was paying $10,000 for a program there, any program there, and anybody from India, if they go and they're paying like 25,000 or maybe 20,000, that really helps in the Canadian economy, right? If they are giving you the best of education there and you're going there, then they look forward to students who can, fund themselves. Let's be honest about this. This is what it is, mostly. But of course, there are scholarship programs, but you have to apply online, and it is absolutely the discretion of the university what they want to do. But you have to have very good scores to prove yourself. You have to say why you want to go and study at the university, so that whatever you write, that is very important, how you're expressing yourself, why you want to go and study there. So all those things matter a lot. And of course, your English exam, which you do here, the score should be good. Because the medium of teaching there is English. And in places like Montreal, not so much Montreal as well, but Quebec is the province there. Any state in Canada is called a province. So Uttarakhand is a state here, but if it was in Canada, we would call it a province. So our state is Ontario, under which is Ottawa, Toronto, all these places, London, many other cities. These are all cities, and Ottawa is the capital of Canada. So in the same way, Quebec is another province or a state, which is very French dominated. So University of Montreal, the teaching method, the language they use is English still, mostly, but also French. But if you want to go to any other colleges or university in proper Quebec, it will only be French. So I'm sure no Indian students would go there, because French is a very, very difficult language. But the medium of teaching, talking, everything mostly in Canada is in English. So the score for your IELTS and TOEFL should be good. Because otherwise it will be difficult for the students to understand in the classroom, because the medium of teaching is English there. So they have to make sure that they study hard and they perform well and they have a good score in IELTS and TOEFL. Any other questions from the student? One more question I'm getting. Students want to know what are the post-graduation opportunities in Canada. Including that, they want to know the work permit and the condition to get the permanent and residency. how to settle in Canada. Yes. Okay, so that's a very good question. We get it in every institution, everywhere in a classroom, a setting like this. So post PG diploma courses, most of the colleges, they offer excellent PG diploma courses, which could be in law, nursing, management, engineering, anything to do with software engineering, like designing or anything like that. So we have any number of courses there. A chef's course, plumbing, many other courses there, including all these academic courses like engineering, BBA programs, diploma in management, business marketing, environmental science, and many other courses. So to be a permanent resident there, so
the most important thing is when you go as a student there, you go on a student visa, right? The Canadian High Commission is in New Delhi, the High Commission. But they have consular offices in different parts of India. So I still believe Kolkata has one for the eastern side. Punjab, you know, most of the students who are in Canada, 90% of the students, I would say, are from Punjab. So they have offices in Chandigarh for consular service, but the main High Commission is in Canada, in New Delhi. They issue the visas there. So first you go as a student on a student visa. You complete your course, and so if it's a professional course, say it's engineering, say it's IT, okay, say it's software. You're studying something in software. So you can have a training program in one of the companies there. And if they really like what you're doing there, many companies, they would, you know, take you and give you an employment there. So once they give you an employment there, then your student visa is changed to work visa. You start working there, and it is then when you can apply for permanent residency. So permanent residency comes, and then you get a permanent resident card. And to become a citizen, out of 5 years, 3 years you have to be in Canada. So more than 1,000 days in Canada, which could be, it doesn't have to be strictly that 3 years you cannot come back home at all and you cannot visit your family members here. No, it's not like that. Out of 5 years, 3 years is maximum when you have to spend time in Canada, 1,000+ days. But that could be you come back to India and go back again. But out of 5 years, 3 years, number of days should be that much. You can apply for your citizenship. It used to be a little bit more easier in Canada before to get a citizenship or to be a permanent resident there. Things have changed a bit now for various reasons actually, which I really explicitly don't want to say here right now. So they are a little bit more strict right now. But having said that, I would still say it is easier in Canada, way more easier than US. Because in the US, what happens, you're an engineer here, you finish your course here and you want to go and work in US, you first get an H1 visa. And then that's for 5 years, strictly 5 years. After that, they may ask you to come back to India. But if your employer is very happy with you, they will extend your H1 for a few more years. But still to get a green card, even after that, it is very, very difficult in the US. Not that you don't get. There are like millions of Indians in the US, they do get. Again, it's performance, how well you perform at the company, if the company will push your green card or not. They will have to do everything on your behalf. But in Canada, it's a little bit different, and it is not as strict as US. But by the day, it has become a bit more difficult in Canada as well, but not. It is still very welcoming. You can still go to Canada. And you can, of course, become a Canadian citizen or a resident there. If you don't want to leave your Indian passport, then you can stay as a resident. You will still have your Indian passport. But if you want the Canadian passport like we have, the reason why we took the Canadian citizenship, let me also share that with you. We were very emotional when we had to hand over our Indian passport. We were very, very emotional. But life becomes a bit more easier when you have the Canadian passport, in the sense that Europe, any country you can visit without a visa. So from India, if you have an Indian passport, you want to go to France from Canada, or you want to go to Belgium or anywhere, you will have to apply for a visa. So when you have a Canadian passport, you can go to the US anytime you want, any number of times you want. You can even come to Europe anytime. We don't need a visa. So usually we always take the Air Canada flight and come to India, which is a direct flight. So we come non-stop from Canada to New Delhi, 14 hours non-stop, and we landed India. But this time we took via Paris, so we didn't need any visa, nothing. We just got out of the airport, went and saw the Eiffel Tower, and came back to the airport. So it's a huge advantage in that way. Emotion is a very different thing, which we still have, and we were very sad to part away with the Indian passport, but
this is one thing which is advantageous because you can travel anywhere in the world. So if you have a Canadian passport, you get an OCI card from the Indian government, which is almost like a dual passport. Overseas citizenship of India is an OCI card. So we have two passports, which is one is a blue Canadian passport, exactly same like the Indian passport, the dark blue one, and we have a light blue passport, which is issued by the government of India for us, Canadian citizens. So that is OCI card we call, but it's a passport. So with that, we can come to India multiple times, n number of times. We can also come to India and come back to India and start working here till our retirement. We can work here, but we will still have the Canadian passport. We don't have to leave that behind in Canada, or we don't have to part with that. OCI card is so good. Like, you only two things which we cannot do with the OCI card in India is we cannot buy an agricultural land here, which any one of you can buy as an Indian citizen. We cannot do that with the OCI card. And the second is we cannot vote here. So when there is election here, we cannot vote, like which all of you will be doing from May onwards, I believe, for the upcoming election or any state election. We cannot vote here, we cannot buy an agricultural land here, but everything else, anything else, we can do exactly what you can do here. We can buy a property, we can have an MDS IndoCan have many offices in Canada, in India, we can work here, we can retire here, but Canadian passport we will still have. So this is an excellent thing, which is almost like a dual citizenship, but it is an OCI card. So I think I answered all your questions. Anything else? We are good? Okay, perfect. So once again, thank you very much for coming, and happy Holi to everyone and to all your family members. And we look forward for various collaborations with your prestigious university. Thank you very much. And not that I cannot speak Hindi. मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ. Not as good as my brother maybe. There's always a gender issue when I speak Hindi. When I have to say मैं जा रही थी amongst my friends, I just say मैं जा रहा था यार. So that is the gender issue which I have, but otherwise I can speak Hindi as well. अगले बार आके आप लोगों से हिंदी में वार्तालाप करेंगे. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. Thank you so much, madam, for your thought-provoking information. Now I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Dr. Ankush Mittal, for his words of wisdom. Please, sir. Good afternoon, everyone. So, lot has been spoken, and possibly I will not bore you further. After all the excitement, comes my part to speak a few words. Can I have a moving mic? मेरी इस कोलैबोरेशन के पीछे कुछ थॉट प्रोसेस है कि मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ. I was totally so excited after this hearing. I just want to share something on that thought process. My mother is a paralytic patient, and she got paralysis in 2018 April. And so basically my parents stay in Meerut, and first we tried all kind of neurophysiotherapy in Meerut. And after that, we found out that India has best neurophysiotherapy in Hyderabad. It is a center by Apollo, and they charge close to 20,000 rupees per day. So I took my parents there, and 2.5, 3 months I stayed there with my mother.
spending close to 7 lakh rupees per month for three months. There were a lot of robotics, this, that, there was psychological counseling, speech therapy, and so on. So the overall improvement was close to 10 to 20% for my mother. My brother is an Australian citizen. He's a doctor, a radiologist, and he was constantly trying to get a visa for my mother. COVID time came, and they were blocked. And last year, my mother went there, and for a month, she was admitted to a hospital in Australia just for physiotherapy, and she had 70% improvement there. She had difficulty to climb stairs. सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया था, बैलेंस करना मुश्किल हो गया, टॉयलेट जाना मुश्किल हो गया, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद 70% इम्प्रूवमेंट आ गया. शी गॉट कॉन्फिडेंस, अपने आप यहाँ से वहाँ तक पैदल चल सकती थी, स्पीच क्लियर हो गई. सो आई आस्क्ड माय ब्रदर, व्हाट वाज द डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस था, कौन सी मशीन यूज करी, क्या क्या किया. ही टोल्ड मी, नो मशीन्स, ओनली प्रैक्टिसेस. एक मशीन यूज नहीं करी. हमने यहाँ पर पूरा तामझाम बता दिया रोबोटिक्स का. 4 करोड़ की मशीन कितनी, इसकी 10,000 रुपये है. इस मशीन में बैठोगे 5 करोड़, इसके ये वाले पे बैठोगे इस पे 2,000 रुपये पर डे का चार्ज होगा. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? डिफरेंस है कि जो फिजियोथेरेपी में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली वही ट्रेनिंग दी जाती है जो लोगों को हेल्प करती है. वो प्रैक्टिस की बात है, राइट. अभी कल डॉक्टर दत्ता के साथ और मोहा मैडम के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था, एंड दे वर टेलिंग कि इन कनाडा पैरामेडिक्स आर सो वेल ट्रेन्ड कि अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जब तक आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं तब तक बीच में एम्बुलेंस के अंदर पैरामेडिक्स आपका ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है, आपको ऐसा ठीक कर देता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते 90% चीजें आपकी ठीक हो चुकी होती हैं. डॉक्टर को कोई रिपोर्ट दोबारा से करनी नहीं पड़ती. ऑल द टेस्ट आर बेसिकली डन. जैसे वहां पहुंचते तो डॉक्टर इज रेडी विद द एंटायर थिंग. दे हैव डन द बेसिक फाउंडेशन वर्क फॉर द डॉक्टर टू डू. और हमारे यहाँ जब वहां पहुंचते हैं तो फाइल खुलती है, नाम पूछा जाता है पहले, फिर पूछा जाता है कहाँ पे दर्द है, फिर पूछने के बाद उसको भेजते हैं कि XYZ जगह जाओ. और ये किसी छोटे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ. यू कैन टॉक एनी बिग नेम, एनी बिग शॉट हियर. So the difference is of mindset, the thought process. And let's accept it. We are having a lot of sophisticated machines. We have got a good infrastructure. There are very posh hospitals. Very good suit rooms are available there. But let's pick up one area of medical care and see how much change we can bring into Indian medical landscape. And I can tell you one thing, हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर अगर ये चीज करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप से, इंडोनेशिया से सभी लोग यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट करेंगे. क्योंकि हमारी रिगर जो है एजुकेशन की बहुत अच्छी है. मैं दिल्ली के अंदर वेदांता में, पारस हॉस्पिटल के अंदर, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी बारी जाता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, या आपको भी कराना तो मुझसे बात कर सकते हैं. मैं आपको भेज बनाऊँगा आपके लिए. जस्ट साइड नोट पर, कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में, यू कैन ऑलवेज लेट मी. वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग वहाँ पर बैठकर अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं. और यू वंडर वेरी मच कि इतने दूर से लोग यहाँ पर आके कैसे करा रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट. आपको इराक के लोग दिखाई देंगे, इसराइल के भी लोग दिखाई देंगे, और जो रशिया से भी लोग आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं. एक तो हमारी मेडिकल थॉरोनेस बहुत अच्छी है, दूसरा डॉक्टर की नॉलेज अच्छी है, बट उसके बाद भी जो गैप्स हैं हम उसको भर दें. और भरने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ अच्छे एक्सटर्नल कोलैबोरेशन चाहिए जो वर्किंग MOUs हो. MOUs तो हम भी बहुत साइन करते हैं, और आई एम श्योर कि और भी
लोग साइन करते हैं बहुत, बट वो एमओयूज पेपर की तरह नहीं रह जाता. But I am very intent on changing the landscape of India. Now we are talking about engineering. And in engineering, we are talking about industry 4.0 standard and then industry 5.0. And in there, we have IoT, we have smart manufacturing, we have AI, machine learning, we have, cyber security right in machine itself, robotics. Now consider this. Where do we find expert people? Where do we find infrastructure? Where do we find thought process to train people according to that? मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट चीज बताता हूँ. इंडिया के अंदर अब ऑटोमेशन इंडस्ट्री ने जबरदस्त बूम किया है, मानते हैं ना सब लोग, राइट? जब हम लोग 1990s में थे तो 2 या 3 तरीके की कार चलती थी. एक एम्बेसडर, एक फिएट और एक मारुति चलनी जिस दिन शुरू हुई तो सबने एम्बेसडर फिएट छोड़कर 800 के पीछे भाग गए. और फिर उसके बाद जो अमीर लोग थे वो मारुति 1000 या मारुति सुजुकी खरीदते थे. अगर अमीर थे तो बस ये मारुति ही चलती रहती थी, एक मारुति बेची दूसरी मारुति खरीदती, राइट? बट अब देखिए, यू हैव पता नहीं कंपनी के नाम कौन कौन से, उनके मॉडल कौन कौन से. Right? So there is so much boom in automation industry. But if you see any video of automation industry, अगर आप वहाँ पर जाकर कभी विजिट करके आते हैं, कभी देखते हैं, तो उनके अंदर रोबोट्स लगे हुए हैं. आपने शायद YouTube पे देखा भी होगा. इवन इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट्स हैं. अगर वो रोबोट खराब हो जाता है आज, तो उसकी फंक्शनैलिटी में या प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो पता नहीं क्या करते हैं, हम अब्रॉड से इंजीनियर को बुलाते हैं, देखने से रोबोट में क्या कर रहे हैं. तो अभी तो हमारी आत्मनिर्भर क्या है, हम तो दूसरों पर निर्भर होकर चले हैं. एक रोबोटिक डायग्नोस्टिक नाम का कोर्स शुरू किया. आईटीज को हम इंजीनियरिंग कॉलेज पे कोर्स चलाना चाहिए रोबोटिक डायग्नोस्टिक जैसे होता है ना हेल्थ डायग्नोस्टिक्स में ब्लड टेस्ट ये करते हैं. रोबोटिक डायग्नोस्टिक का कोर्स से बताता है आपको कि रोबोट में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो हाउ वुड यू ट्रीट इट, हाउ वुड यू क्योर इट, वेयर विल बी द प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू प्रोग्राम इट टू वर्क प्रॉपर्ली. And how do we get such kind of thought process? How do we get such kind of, where do we get all this knowledge? We get this knowledge by, a very working functional MOU. So I'm thrilled to bits. This. Then Dr. Dutta said I was jumping off from a chair. This is what I've been looking for. In having a vision of Viksit Bharat. And I've been always speaking about study abroad program. I'm sure all of you would have heard about it. There are three verticals which I have started. This is my second month as Vice Chancellor. I don't know whether you are happy with my, contributions or not, because it may be too fast paced for you. But जो अंदर चल रहा है वो बाहर आ रहा है. मतलब काफी टाइम से मेरे अंदर चल रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो जल्दी कर रहा हूँ. बट मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हमारे जल्दी करने के बाद भी रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे, तो इसे जल्दी करना पड़ता है चीजों को. तो 3 चीजों में से मैंने एक चीज शुरू करी और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम शुरू किया है. तो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में हम, जैसे मैडम ने बताया, मोहा मैडम ने बताया कि हमको बच्चे के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ इंटेंट बिल्कुल क्लियरली लिखाना पड़ता है. आपके भी बच्चे होंगे, काफी सारे पेरेंट्स मुझसे शाम को बैडमिंटन खेलने पर बात भी करते हैं कि what should they do when their son is studying in engineering here or somewhere else. तो प्लीज लिसन केयरफुली. पहले हमारे पास एक लेटर ऑफ इंटेंट या किसी कंट्री को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं. शी हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट. सेकंड, आपकी सीवी के अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. और अब्रॉड की कंट्रीज बहुत पसंद करती हैं कि आपके सोशल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. सोशल सर्विस में आप एक्टिव होने चाहिए, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. और आई वुड एनकरेज, yesterday night I called the registrar sir for this purpose.
Now let's have very good drive for our students for social service, because even companies want people who are active in social service. Today the call is a well-rounded individual, not only a person who is good in academics, but a person who is good heart. And that is one star in the CV if you have got some good social project. If you have organized, student, blood donation camps, if you have organized education program in villages, whatever it is. And the third thing is IELTS or TOEFL, which we have started free coaching. And right now we have 2 batches of those students running, right? Did you? Yeah, 1 batch is already running, and 1 batch will start after closing. And this is all across the university. Means if you are from medical, engineering, law, anything, you have a chance to study abroad. And our university will support it. In addition to that, I've streamlined everything. Streamlining everything means previously, before you have to apply, you have to submit your transcript. आपको अपनी समराइज मार्कशीट को हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं. उस ट्रांसक्रिप्ट को, जैसे अगर बीटेक 7 सेमेस्टर का बच्चा, तो 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट को उसे सबमिट करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए. ये पहले एक पूरी महाभारत थी ट्रांसक्रिप्ट को निकलवाना. बच्चा वहीं डिस्करेज हो जाता था, बार बार जाकर वहाँ धक्के खा करके ट्रांसक्रिप्ट निकलवाता था. वो सारा का सारा पोर्टल मैंने सेंट्रलाइज कर दिया. बच्चा एक दिन आएगा और बहुत मिनिमल 25 रुपीज से 50 रुपीज पर सारी ट्रांसक्रिप्ट उसको अगले दिन मिलेगी. सिस्टम को बिल्कुल एफिशिएंट कर दिया है. कोई झंझटबाजी नहीं करेगा बच्चा, कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो देयर इज ऑल द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम आवर साइड for our students to study abroad. But this MOU is not only about that. This MOU is very broad MOU. She spoke such crisp and concrete points. For example, if we could hear from faculty members about their practices abroad in nursing, or in medical science, or in architecture, or in law, or in engineering, we can absorb those practices here. Finally, अगर आप सोचिए किसी भी जगह की सिर्फ प्रैक्टिसेस का ही मैटर होता है. IITs, IIMs, JNU, कोई भी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, MIT, वो सेम बच्चा लेती है, बट वहाँ को डिफरेंट प्रैक्टिसेस कराती है. प्रैक्टिसेस का अंतर होता है. सारे मेडिकल कॉलेजेस सेम नहीं है. एम्स का बच्चा और दूसरे कॉलेज का बच्चा सेम ही बुक पढ़ता है, बट एम्स के बच्चों को अलग प्रैक्टिसेस कराई जाती है. एक अच्छी थॉट प्रोसेस दी जाती है. वो थॉट प्रोसेस हमको मिलेगी अगर हम ये MOU में पार्टिसिपेट करेंगे. MOU क्या होता है? MOU इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है. और MOU फेल क्यों होता है? कि वो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है. आपको मेरी बात समझ में आया? MOU क्या होता है? इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है. और फेल क्यों होता है? मतलब फेल मतलब वो एक ड्रॉअर में नोट की तरह पड़ा रहता है. एक पर्टिकुलर IIT के डायरेक्टर से मैंने उनकी स्टैटिस्टिक्स पूछी कि आपके कितने MOUs हैं, तो उन्होंने कहा 700+ MOUs हैं. और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके कितने फंक्शनल MOUs हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे इतने फंक्शनल MOUs हैं. So I certainly we are not going to waste our time like this. I and we all here, let's try to make it working. And how will it work? Person to person. MOU will always work when there is a person on this side who takes interest and he connects with the help of the MOU to the person that side. वही बॉन्डिंग का इंटरफेस है ये MOU. अगर आप बॉन्डिंग कर सकते हो तो आपकी ग्रोथ है, इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ है, और ये MOU 100% काम करेगा. अगर आप इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट छोड़ दोगे
तो ये एमओयू हम भी अपने उसमें लिख देंगे, आपने भी लिखा हुआ है, काफी सारे दिखाएंगे अपने लास्ट में। ठीक है, ये मेरे से पहले वाले एमओयूज हैं, इस वाली यूनिवर्सिटी के साथ है, उस यूनिवर्सिटी के साथ है, और एक्टिविटी वाइज कुछ भी नहीं है। तो आई एम नॉट ऑफ दैट नेचर कि हम दिखाने के लिए ताली बजाएं, डॉक्टर दत्ता भी खुश हो जाएंगे कि ताली बजाई थी, बुकी दे दिया, और यू नो बहुत अच्छा है, हमने भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि बिहेवियर में कोई फायदा नहीं ऐसे में। वी हैव वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड कि हमारी एक्टिविटीज क्या होंगी, एंड विल टेक स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स एवरी सेमेस्टर, वी विल रिव्यू। वी इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। I invite all of you to participate in that. It is your initiative that will make this MOU happen. Every individual of you, all the students and all the faculty. But then we will have a very wonderful collaboration with Canada, and wherever they take us, I'm sure that they will also spread their wings to other places, and we have MOUs with those places as well. But I can tell you good things about Canada. कनाडा इज अ वेरी ओपन कंट्री, अनलाइक यूएस। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सुन रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि कनाडा में एजुकेशन का क्या फायदा है वर्सेस यूएस की एजुकेशन का। यूएस में अगर आपने वीजा अप्लाई किया, आपके पेरेंट्स ने वीजा अप्लाई किया, तो 1.5 साल की क्यू है। और यूएस के अंदर अगर आपका मास्टर्स खत्म हो गया, जैसे आपने मास्टर प्रोग्राम में किया, तो कोई एक्सटेंशन पीरियड नहीं है, मतलब आपको नेक्स्ट फ्लाइट से घर वापस आना पड़ेगा। अगर आपको मास्टर के टाइम पे जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड, और जॉब नहीं मिली तो देयर इज नो बफर पीरियड फॉर यू। कैनेडा इज नॉट लाइक दैट। कैनेडा डजंट हैव दैट काइंड ऑफ कट कि ठीक है 1.5 साल की क्यू लगा दी लोगों के ऊपर, पेरेंट्स भी नहीं मिल सकते बच्चे से जाकर। और क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मेरा एक लड़का अर्पित गोयल, पोर्ट्री ग्रेजुएट, स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी में गया न्यूयॉर्क में, और ऐसे होली का टाइम था, होली के टाइम पर स्विमिंग करने गया अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर। वहाँ को उसको ठंडा पानी था, कार्डियक अरेस्ट हो गया, नहीं मर गया, रुक के मर गया। उस मदर हरिद्वार में थी, एंड इट वाज अ ट्रॉमा फॉर हर टू गेट द बॉडी बैक फ्रॉम यूएस। 1 महीने के बाद बॉडी वापस आई उसको, क्योंकि इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे, रूल्स रेगुलेशंस। तो कंट्री की थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो हमें कैसे ट्रीटमेंट देती है और हमारे बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट देती है। तो मैं तो बहुत लीगल हूँ, और अभी जो इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़ी टेंशन है, डॉक्टर दत्ता विल थ्रो मोर लाइट ऑफ इट, आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट, बट इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड वेरी सून। इट इज ओनली वेरी टेम्पररी। Both countries want desperately to work on it, because Canada 3 or 4 years before has, I am sure कि आपने जगह जगह पर पंजाब में बड़े बड़े बोर्ड्स पे देखा होगा, वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट, कम टू कनाडा इफ यू हैव इंटेलिजेंस, कम टू कनाडा वी विल सपोर्ट यू। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने आइडेंटिफाई किया कि इंडियंस के पास दिमाग है, हार्ड वर्क है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी अच्छी हैं, और कैनेडा को बिल्ड करने के लिए उसको इंडियन मैन फोर्स चाहिए। तो दे आर वेरी वेलकमिंग इन नेचर, एंड इन यूएस रैंकिंग दे हैव गॉट टॉप यूनिवर्सिटीज। सो इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस। It is a very thrilling situation for us. If it was in US, I would have been much more, conserved about it or reserved about it. But it is in Canada, I am much more open to it. It is a very good place, and our students will have brighter future. बस आखिर में मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, आप लोग डॉक्टर दत्ता को एक पेट्रियट की तरह जानते हैं, मेरे भी आप सारे जितने भी ऐसे ये बोरिंग भाषण देता हूँ मैं आपको, उसमें भी आप देशभक्ति और ये सारी चीजें सुनती हैं। आप कहोगे कि मैंने ये स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम चलाया है, ये तो देश गद्दारी हो गई कि अपने बच्चों को वहां भेजें
और जो अच्छा टैलेंट है वो चला जाएगा, अब हर एपिसोड हो जाएगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ दर्शन देना चाहूंगा आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स की नींव उठानी है तो बाहर से जाकर नींव उठाओ। मैं सिंगापुर में जब भी मुझे देशभक्ति ज्यादा चढ़ती थी तो उस पॉइंट पे जाता था जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA को फॉर्म किया। वो एक स्पॉट है सिंगापुर के अंदर, मेमोरियल की तरह। आप जाके अभी यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देखिए, सिंगापुर में से प्रिजर्व करके रखा है। इंडिया में पता नहीं हमने कोई बड़ा मेमोरियल भी बनाया है, बड़ी रोडों के नाम में हमारी रोड से औरंगजेब रोड और है ना अकबर रोड, पता नहीं कौन कौन सी रोड बनी। बट ही वाज अ ट्रू पेट्रियट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम था कि बाहर से जो हमारे सेनानी बाहर आए हैं उनको पकड़ो, वो इंडियन आके अटैक करेंगे। वो कितने छोटे थे, कितने कम परसेंटेज थे, और उन्होंने ब्रिटिश। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं इधर, वो आगे इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो वो बाहर की चीज इंडिया में देंगे तो जो इम्पैक्ट आएगा वो हिला देगा। क्योंकि बाकी सारे एट्रीब्यूट हमारे पास हैं। हमारा हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्किंग मैं बता सकता हूँ आपको। ऐसा मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। मेरा भतीजा, क्योंकि मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेरा भतीजा शाश्वत कंप्यूटर साइंस का एस्पिरेंट था कि मुझे सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़नी है ऑस्ट्रेलिया में। सिटीजन है वहाँ, 2006 से रह रहा है। तो मेरे ब्रदर ने कहा इतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, इतना मुश्किल है वहाँ पर। मैंने कहा क्या मुश्किल है? बोलते 94 परसेंटाइल चाहिए तुम्हें 12th क्लास के बोर्ड में उसे लाना पड़ेगा। अच्छा, 94 परसेंटाइल बहुत बढ़िया परसेंटाइल। मैंने अपने ब्रदर से पूछा तो उन्होंने यहाँ इंडिया से मेडिकल कॉलेज में पढ़ी, तुम्हें पता तुम्हारी क्या परसेंटाइल है? मैं IIT से पढ़ा हूँ, तुम्हें पता मेरी क्या परसेंटाइल है? इंडिया में परसेंटाइल है, अगर आप IIT में पढ़ना चाहते हो तो 99.99 परसेंटाइल चाहिए। फिर मैंने शाश्वत को कहा कि शाश्वत को जो 12th क्लास का पेपर है उसको भेज दो, उसमें 12th क्लास में पेपर है। और मैंने 11th क्लास के फर्स्ट टर्म वाले बच्चों को दिया, मैंने कैसे सॉल्व करके दिखाऊँ, उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। और मैंने हमारे 12th क्लास के पेपर को मैंने शाश्वत को भेजा, इधर ऐसे सॉल्व करके दिखाऊँ। आई कैन नॉट सॉल्व मोर देन 5%। मैंने कहा अभी तो ये 12th क्लास का पेपर है, इसके ऊपर JEE मेंस है, उसके ऊपर JEE एडवांस्ड है। एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के प्रोफेसर ने हमारे, आप सर्च करके देखिएगा, इट इज टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, उसने यहाँ के IIT JEE एडवांस के फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करी। उसने कहा आई कुड ओनली सॉल्व 20% ऑफ द पेपर। और आपको बताऊं हमारे हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं 96%। JEE टॉपर्स में 96% लेता था, टॉप 100 उसके अंदर बाय गारंटी 80% क्रैक मार्क रहता है। क्यों? क्योंकि 30,000 प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व करता है 11th की क्लास में, 30,000 प्रॉब्लम मैथ्स की सॉल्व करता है, और 20,000 प्रॉब्लम वो केमिस्ट्री की सॉल्व करता है। इतना मेहनती बच्चे। और हम उस, अब जो हमारा मैथ्स का 70% का बच्चा है वो इतना ज्यादा ब्राइट है कि अब्रॉड में जाते के साथ ही दबाव करते हैं। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, सिर्फ कुछ सेनानियों की जरूरत है बाहर से, जो अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कुछ अच्छी मशीन लेके आएंगे, बाकी सारी चीजें हमारे पास लाते के साथ ही दिमाग कर डालेंगे। तो ये हमारी पेट्रियोटिक स्पिरिट। मैं नहीं सोचता हूँ कि हम वो मोंडुक की तरह, फ्रॉग इन द वेल की तरह ज्यादा सर्वाइव करेंगे। ये हम आप एक बच्चा है, उसने बिना देखे कैसा मैं IIT JEE को फोड़ दूंगा,
मैंने कहा बेटा तूने पेपर देखा है? ऐसे कह रहा खोल डाला, बोले देख तो ले। इसी तरह से हमने नारा लगाया, हम दुनिया के पहले कंट्री होंगे, हम आत्मनिर्भर भारत होंगे, हम विकसित भारत होंगे। बेटा देखा है तुमने दुनिया में क्या चल रहा है? Have you seen the world? What is the world doing right now? Right? How can we say that we will be the number one country without having, we are dependent right now 99% of chip industry from abroad. And our Honorable Prime Minister has a vision that we will be supplying to most of the countries abroad in another 10 to 15 years. उल्टा रिवर्स कर देंगे। अभी हम 99% चिप इंडस्ट्री क्या है आप मुझे बता सकते हो? मोबाइल ही नहीं है, सिर्फ आपका टीवी है, आपका कुछ भी चीज है, ये डिवाइस है, कुछ भी चीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो सब हम डिपेंडेंट है इसका। तो हमें इंजीनियर्स क्रिएट करना है। माइक्रोन ने $2.6 बिलियन का प्लांट लगाया है गांधीनगर के अंदर, उसको 7,000 इंजीनियर्स चाहिए और कुछ 20,000 टेक्नीशियंस चाहिए। हमारे पास न सॉफ्टवेयर है, न हार्डवेयर है, न टीचर्स है। उधर से विजन बहुत अच्छा आ रहा है ऊपर से, बट हम लोगों को अपग्रेड करना है अपने आप को। और दिस इज ऑल राइट नाउ टू इम्प्रूव। तो कैसे कर सकते हैं? कोलैबोरेशन से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीख कर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और फिर मेहनत करें, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं भी तो अब्रॉड से आया हूँ, मैं अब्रॉड से आया हूँ, मुझे तो आपके बच्चे भी अब्रॉड से हैं, हमारे बच्चे भी अब्रॉड से हैं। कोई ना कोई तो संभालिए वापस आएगा, कुछ तो देगा देश को वापस आता है। तो ये स्टडी अब्रॉड, ये टाइप जो है उस स्पिरिट में देखी जाए कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत फाउंडेशनल स्टेप है। हमें मोदी जी ये नहीं कहते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि हमें कोलैबोरेशन बाहर से नहीं करना चाहिए, उसे बहुत एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग इंडिया के इतने मायोपिक हैं, मैं बताना चाहूँगा। कल एक बच्चा वो राइट करके क्वेश्चन को पूछ रहा था, काफा जो होता ना होगा वो फिर स्पीच रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाद में रिलीज करेंगे, तो लोग सोचेंगे पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूँगा आपको, आप सब यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, सॉरी थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ देश पर अंदर लोगों को, गरीबों को खाना खिलाते रहोगे तो देश को भी विकसित हो सकता है। क्योंकि आप बिलियंस ऑफ डॉलर तो चिप इंडस्ट्री को उधार दे रहे हैं, तो जो अभी गरीब हैं वो और गरीब बन जाएंगे, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास बन जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद वो पुअर क्लास बन जाएंगे, स्लम्स की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी सोसाइटी। तो फॉरेन पॉलिसीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश को उठाने के लिए। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर उनकर कुछ नहीं कर रहे, उनसे मतलब दे आर सो मायोपिक इन देयर अंडरस्टैंडिंग कि देश को उठाने के लिए आप जैसे मोदी के लोगों को जाकर भाषण देते रहो, या ये कह दो कि 10 रुपए में चावल आटा वगैरह सब मिल जाएगा तो तुम्हारा देश विकसित हो जाएगा। ऐसे तो होना ही नहीं। As a vice chancellor, I can also tell you that if I only work within the university, this university will never grow. I have to seek collaboration from outside. Yesterday, by grace of my dear friend Dr. Dutta, I had a very fruitful meeting with Director of IIT Roorkee and Head of C-Trans, Dr. Uttam Roy, and they spent 3 to 4 hours with us. We identified very critical areas of collaboration. एक्टिविटीज वेल डिफाइन कर दी, उसी से हमारा इंस्टीट्यूट उठेगा। अब आप छोटे स्केल पे भी देख सकते हो, जब तक आप बाहर से कोलैबोरेशन नहीं करोगे उठेगा नहीं। तो बड़े स्केल में भी तो यही प्रिंसिपल वैलिड है, बाहर से आना है उसको, सभी लोगों को साथ में चलेंगे तब चलेगा। सो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई जॉय एट दिस इवेंट व्हिच इज देयर। एंड ऑल्सो it is very surprising that yesterday night we shared a MOU, and they have MOUs only with top places, with IIT Mandi, IIT Roorkee, and MNIT Jaipur, and IIT
I think IT Rupert, I think we are one of the first private universities to do it there. So let's have a round of applause for that. They have chosen, I mean, it is friendship of Dr. Dutta and Mohua that they have chosen us, and so I want to, and he believes that we will do something about it. That's all he has chosen us. उन्होंने मेरा देखा कि मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट किया, हमारे सीनियर लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट किया, उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ये कुछ करना चाहते हैं देश के लिए. That motivated them. So let's keep up that spirit. So any question, comments, criticisms? So I can stand like that. So any criticisms? You can do that. So should we go to the next one? Okay, thank you. Thank you so much, sir. We are really charmed with your influential words. Now I would request Mr. Suro Kamanchi and our Pro Vice Chancellor, sir, Registrar, sir, Dean IQAC to join on the stage for signing the MOU between COER University and MDS IndoCan, Ottawa, Canada. Please give a big hand for this world achievement of COER University. Please give a big round of applause. Thank you so much, sir and madam, for signing this MOU with COER University.
express our gratitude to our guests, I would request our dignitaries to present their mementos. I would request our Vice Chancellor, sir, to present memento to Mrs. Mohua. Thank you, sir. Now, once again, I would request our Vice Chancellor, sir, to present memento to Mr. Suru Kamalji. Now I would like to invite all faculty members to please come for a group photograph. And just a minute.